To this meeting of study circle, Safdarjung Enclave CP study circle, and we have the pleasure of having our NIRC chairman Avinash Gupta, who is there with us today to take up the topic. Obviously, first week of February, we all look forward to the budget and the synopsis. And the interesting part is that I guess for the first 4-5 days after the budget, there are always every year some nitty-gritties which keep on pulling out of the bundle, that new explanations, new areas which crop up and which we understand. So it's always very healthy to have a budget meeting after 3 days or 4 days, because by that time at least some kind of understanding of the budget has gone down with the speakers, and even the participants, even the members are a little more abreast with the changes, and it's easier for them to comprehend the changes. So with this background now, I request CA Avinash ji to please take up the topic on the budget 2022. Thank you, Anuji. For this Union Budget or Finance Bill 2022, yes, as rightly pointed out by you, there are a lot of nitty-gritties, and I can say this is the most difficult finance bill I have ever seen and analyzed. So the amendments are too much technical. Every time when I read, I get some new thing which is coming up. So that's how I can interpret this finance bill 2022. And one more good thing about this budget, what have happened, that they have given a memorandum explaining the bill, which they raised from normally 250-60 pages to 150 pages this time. So huge text is being given in this budget speech. Budget, though on a reverse side, the budget speech is too less. It is less than 3 minutes, which have been given to direct tax proposal. But yes, there are a lot of changes which is there. So let us analyze and understand these things in next 50-55 minutes. So first of all, as far as the rate of tax is concerned, so there is no change in the rate of tax. However, there is a change in the surcharge. So for all the long-term capital gain under Section 112, earlier it is liable for maximum surcharge of 37% as well. But now the capping is being done for up to maximum 15%. So now any capital gain, whether it is a long-term capital gain under 112A or short-term capital gain under 111A, in all three cases, the maximum surcharge, and now dividend also they have included last year. So now the maximum surcharge which is applicable in this case is only 15%. Now after that, there is a change in the surcharges of cooperative society. So cooperative society exceeding 1 crore, they are liable to pay a surcharge of 12% of the tax. But now this have been reduced to 12%, from 12% to 7% from income between 1 crore to 10 crore. So above 10 crore is still, it is there at 12%, but income between 1 crore to 10 crore, the surcharge has been reduced from 12% to 7%. Then coming to the AMT rate on the cooperative society, the alternate minimum tax, which was earlier 18.5%, what is need to be paid by a cooperative society, that have also been reduced from 18.5% to 15%. So these are the changes with respect to the surcharges. There is one more change, which is, I believe, is the welcome change with respect to the surcharge of AOP comprises of only companies. So what happened, Anuji, if there is a government tender or if there is any big project, nowadays no company is doing it alone. So there are consortium of companies who are joining hands together and then bidding for a contract. And these companies are joining hands only for each and every project. So what happened in those cases, that these companies are making AOPs for execution and bidding of the project. Now, if this AOP is liable to tax as a normal person at 30% only,
And the surcharge on this AOP will also rise from for if the income exceeds till 37% as an individual. So what happened, like a company is there who is otherwise liable for tax at 25.16% or 26% as the case may be. But and under AOP, they are liable to be pay tax maybe up to 43%. And when this income comes to the company, at that time, this is tax free. So effective tax rate of company have increased in these cases from 25% to 42%. So now what they have done is under the AOP also, on AOP which are comprising of all company SSCs only, the maximum amount of the surcharge they have restricted it to 15%. तो 15% से ज्यादा सरचार्ज एओपी को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन यही है, ऑल द मेंबर्स ऑफ एओपी शुड बी कंपनी, शुड बी कॉर्पोरेट्स. तो कॉर्पोरेट्स होगा तो ही आपको ये फायदा मिलेगा. So this is an amendment with respect to the taxes. Now let me move to the other parts of the amendment. One, as far as individuals are concerned, so there is one amendment with respect to the COVID relief. We all are saying that COVID is there and people have received money during the COVID either from the employer or from other people, and everybody is asking what will happen on this, whether this will be taxable or not. Now that on 25th June 2021, they have issued a press release that amount received from COVID from employer as well as from other people, they are considering that they will not be taxed. They are not going to tax it. Now formalizing that press release, what they have done, so they have done 4 amendments. So let me take one by one for this COVID relief. The first amendment, they have done it under section 17.2. 17.2 talks about the perquisite value of perquisites. The 17.2 says that if any money which have been received from the employer for the medical treatment of the employee or any of the family member, the same is not regarded as perquisite to the extent the amount is actually spent on the medical treatment of the person for who is suffering from COVID. So Anuji, if you have given 5 lakh rupees, for example, to any of your employee, then this 5 lakh rupees is a perquisite. But if we spend the entire 5 lakh rupees on the medical treatment of either himself or his family member who is suffering from COVID, then this entire 5 lakh is exempt. If we spend, let's say, 4 lakh 80,000, then 20,000 is becoming the perquisite only. So now every employer who have given money to the employee, then he has to ask for the bills and other amount, that how much is the amount which is actually spent by the employee. And this is a retrospective amendment effective from assessment year 22-23, meaning thereby any money given on or after 1st of April 21 is covered under this provision. Second, so suppose instead of employer, few other people have given this money for the medical treatment. So I am admitted in the hospital. My wife do not have money. Anuji and B.S. Agarwalji both contributed 5 lakh each for my medical treatment. So you both are not my employer. So there are many people who joined in. They are family, they are alumni, they are people who are in neighborhood, etc. So they have contributed towards the medical expenditure of the person during this COVID time. So we have a provision called 56.2.10, which says that any person who is receiving any money without a consideration or without inadequate consideration exceeding rupees 50,000, that will be liable to be taxed under 56.10. So whatever money Anuji and B.S. Agarwalji given to me for my medical treatment during COVID, that become taxable in my hand with this provision. Now they have added a proviso to it, and in this proviso they say that any amount received during the medical treatment of the person, if the amount is actually spent on the medical treatment of the COVID treatment, then this amount is not taxable under 56.10. तो ये आपका क्या हो जाएगा, tax free हो जाएगा. There is no need to pay any tax on this medical expenditure. Third, unfortunately, if somebody died because of COVID, so then the employer used to give money to the family members of the deceased person. One is the regular entitlement of leave encashment, gratuity, etc., etc. So that is covered under the existing provision itself. Many employers have given a special amount, a special compensation
because of the COVID death. Now the question comes, because the family member is not regarded as the employee of the company or employee of the employer. So they are also hit by this 56(2)(10), whereby they have received money from the employer of the deceased person, and they feel that how to tax those transactions. Now this also is taken care by this finance bill, and they said that any amount received by the employer, by the family member of the deceased person, from the employer of the deceased person, it exempt or is not taxable under 56(2)(10) without any limit. कोई बिना किसी लिमिट के ये जो है आपको हम टैक्स फ्री करेंगे, बट दो कंडीशन, टू कंडीशन which needs to be satisfied. The money must have been received within 12 months from the end of the month in which the person died, and the reason of death is COVID only. Without that, they will not, the exemption will not be given. Second, if the money on the account of death from the COVID is being received other than employer, मान लीजिए मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं और मेरी पार्टनरशिप फॉर्म ने मुझे पे किया, there is no employer-employee relationship in that, or maybe society, friends, family, etc. have paid this money to my family, to a family member. Then they said that if the money or aggregate money received during the after the death of the deceased person, if it does not exceed 10 lakh rupees, then it is tax free. What will happen if it exceeds 10 lakh rupees? Let's say 11 lakh rupees. Then entire 11 lakh rupees will become taxable. So 10 lakh रुपए तक मिला तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर 10 लाख 1 रुपया मिला, then entire 10 lakh 1 rupee will become taxable. For both employer and non-employer, the condition is money should be received within 12 months from the end of the month in which death is there. And second point is that the death should be of a COVID death. Now there are a couple of questions which have emerged. So suppose there is a person who is suffering from COVID, and after his COVID is negative, but he could not recover it from the COVID, and on his death certificate the COVID is not mentioned. So whether we will treat it as a COVID death or not. If answer is yes, then yes, these exemptions are there. But technically speaking, I feel that on the death certificate it is not regarded as COVID death. So if it is not regarded as COVID death, I have my own doubts whether the department will give these kind of exemption or not. So this is there. Second, what will happen if the money is received by each family member and it is less than 10 lakh rupees? So for example, the wife of the deceased get 9 lakh, the daughter of the deceased get 9 lakh, the son of the deceased get 9 lakh. So ultimately they got 27 lakhs. So whether they will tax it or not, because the word used is member of the family, meaning thereby a member of the family, each member is a separate member, and this exemption limit of 10 lakh will be allowed to each member. So that's also a question to be answered by the department in the due course. Next, there was an amendment with respect to the virtual digital assets. So Anuji and me, we are discussing about to go and buy the bitcoins and the cryptocurrencies. Then Anuji and when we are trying, we come to know that cryptocurrency is only a smaller part of it. There are many other digital assets which are generated from the encryption of the technology or the computer, which may be a token, which may be an information, which may be any kind of a code or number, etc. All are in the form of virtual digital asset. Maybe a non-fungible token, or maybe any other digital asset as may be notified by the government. If anybody transferred the digital आने वाले asset, वो अंदर एचडीएफसी की तरफ मुड़ गए थे, कह रहे थे हाँ ठीक है आ रहे हैं. नहीं सर अग्रवाल जी, हम एचडीएफसी नहीं मुड़े, हम यहीं पे हैं. अच्छा सॉरी सर. चलिए कोई बात नहीं सर. So any transfer of these digital virtual digital asset is now liable to be taxed at a special rate of 30%. No expenditure of any kind will be allowed against it. However, if you have purchased the digital asset, then in that case you can always deduct the cost of acquisition of the digital virtual digital asset. So that is allowed, but no other expenditure will be allowed. If you have income from the digital asset, it is not allowed to set off against any other losses. If you have loss in the digital asset, it is not allowed
to be set off against any other income, and it is also not allowed to carry forward the losses of this digital virtual on the transfer of this virtual digital asset. तो ना तो ये किसी और से सेट ऑफ हो सकता है, ना कोई और इनकम इससे सेट ऑफ हो सकती है, और ना ही इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कोई एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे किसी भी तरह का, लेकिन हाँ अगर आपने खरीदा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम आपको अलाउ करेंगे। और हाउ टू ट्रैक इट, ट्रैक के लिए एक नया सेक्शन डाल दिया उन्होंने 194S। 194S से कि एनी पर्सन हु इज मेकिंग अ पेमेंट और providing any other digital asset, so at that time he is under an obligation to withhold the TDS at the rate of 1% under section 194S। तो ये 194S में आपको जो है ये TDS काटना पड़ेगा। अब अनु जी ने मेरे को बोला कि मेरे पास जो है 50 बिटकॉइन पड़े हैं, तो कैन आई ट्रांसफर इट टू यू? मैंने कहा जी बिल्कुल कर दो ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। कहते व्हाट विल बी द टैक्सेशन? तो नाउ आज की डेट में अगर आप मेरे को कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करोगे, इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एसेट as specified under 56(2)(10) does not include this cryptocurrencies and virtual digital asset. But now they have amended this section also, and in that section also they said asset means asset as defined under 52 of the Income Tax Act and includes virtual digital asset. So Anuji, अगर मेरे को ये बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं, तो द मोमेंट आई रिसीव those coins, whether I'll pay him any consideration in cash or by another digital asset, I am under an obligation to withhold tax at the rate of 1% under section 194S, provided the aggregate value of the transfer does not exceed the value exceeds 10,000 rupees or 50,000 rupees as the case may be. So I'm not going in that detail, बट 1% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब वजीर और जितने भी हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं इंडिया में, दे ऑल विल बी विदहोल्डिंग 1% टीडीएस ऑन sale of all digital assets. But what will happen to all the exchanges which are situated abroad? I don't think that government will be able to do it as of now, but maybe in a longer run, these people, these foreign exchanges will also come under the tax net shortly. So this is all about the virtual digital assets. Now let me move to the next important part, which is the changes in business chapter. The first change which have come under section 37. Under section 37, we say that certain expenditures are disallowed, and then it was written any amount pays as penalty for violation of any law is disallowed. Now the question is, violation of any law means a law of India or law of a foreign country also. So there are decisions which say that law of only India is to be taken under 37(1). Law of foreign country is not included. Now they have said law means law either in India or outside India. If any amount is paid as penalty, then that amount is disallowed. Second, they said there are many association, many governing bodies like IMA, etc., who have given many circulars and information of unethical expenditure. If any person have incurred those unethical expenditure, then on that unethical expenditure is also disallowed. Third, they said if compounding fees is paid for making good an offense. So earlier we say that compounding fees is not in the nature of penalty, hence these are allowable expenditure. Now they said even a compounding fees paid is also disallowed. So अगर अब आपने GST रिटर्न लेट फाइल करी और आपने लेट फाइलिंग फीस दी, दैट इज इन द नेचर ऑफ कंपाउंडिंग फी। आपने आरओसी की रिटर्न्स लेट फाइल करी और लेट फाइल में आपने नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस दी, तो नॉर्मल फीस तो आपको अलाउएबल होगी, बट वो जो एडिशनल फीस थी वो जो 12 गुना हो गई है, तो दोज एडिशनल फीस आर आल्सो इन द नेचर ऑफ कंपाउंडिंग फी। आपने आपका गाड़ी जो है, कंपनी की गाड़ी जा रही थी, पुलिस वालों ने रोक ली और उन्होंने कहा कि ये चलान कटेगा, दैट चलान इज आल्सो इन द नेचर ऑफ कंपाउंडिंग फी। फेमा की वायलेशन हुई, फेमा की वायलेशन के बाद आपने जो है आरबीआई को अप्लाई किया, वहां पे आपने ऑफेंस कंपाउंड कराया, कंपाउंडिंग फीस नॉट अलाउड। टीडीएस की वायलेशन है, टीडीएस की प्रोसिक्यूशन की आपने कंपाउंडिंग कराई, दैट कंपाउंडिंग फीस इज नॉट अलाउड नाउ। So all kind of compounding fee paid is now regarded as expenditure which is disallowed. So as a tax auditor also, you need to be cautioned that whenever we are doing a tax audit, we need to take out these cases and we need to check
whether any person, any SSC have done any kind of these compounding fee or unethical expenditure. If yes, then we need to simply disallow them in our tax audit reports as well. Next, there is a section called 40AI. So 48(2)(I) we can say there it is said that any tax paid under this act is disallowed. But the definition of tax does not include surcharges and education cess or secondary education cess. And Bombay High Court and Rajasthan High Court have already allowed in many cases that whatever is the amount paid towards the cess, secondary and higher education cess, etc., is an allowable deduction. Now they have made a retrospective amendment with effect from assessment year 2005-2006. 17 साल पुरानी, जबकि सरकार ने कहा था कि हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, और अपने वादा तोड़ के they have done a retrospective amendment since finance assessment year 5-6 that tax includes surcharge and cess. तो अब आपका जो सेस वगैरह अगर आपने कभी किसी ने डिडक्शन क्लेम किया है तो that deduction will not be allowed with the with impact of with the impact of this particular amendment what they have made. Then we move to straightforwardly an amendment, which is an amendment in section 68. In section 68, we know that whenever a company is issuing shares, then the company has to prove the source of the source. So, for example, Anuji have subscribed for the shares of a company, and then he have taken a loan from myself. Then the company has to prove that this money is being given by Mr. Anu Thapar, and the back-to-back he have taken a loan from me. So my credit worthiness is also to be proved. But it is there only in case of share capital. It is not there in case of loan. So now with effect from 1st of April 2022, if any loan or borrowing is being taken, then department have a right to ask source of a source. So Anuji, when I come to you and say, give me a loan, you give me a loan, that is, I am very thankful to you, but at the same time, I will ask you whether the loan is given out of your own funds or loan you have taken another loan from B.S. Agarwal ji. If answer is yes, then I need all the documents of B.S. Agarwal ji also. So in case of loans and borrowings, I need to know the source of the source also. And I don't know whether bank or NBFCs will provide me the source of the source or not. But yes, there is a provision which have been incorporated under section 68, whereby it was held that source of the source may be asked by the assessing officer in case of loans and borrowings as well. तो ये एक नया amendment आया. Next is the amendment under section 79A, which is talking about that during the search or survey proceeding, if you have surrendered certain income or the income tax department have come across of any income which is an undisclosed income, and there is an carry forward loss or a loss during that year, that particular year for which they have unearthed the undisclosed income, then this is allowed to be set off. But now 79A, they have incorporated a new section which says that if there is any undisclosed income during the search or survey proceeding, that is not allowed to be set off against any loss either during the year or carry forward loss. So that set off is not allowed for search and survey proceedings during the case of search and proceeding, any surrender amount, whatever you will do it for a particular assessment year. Now let's move to the chapter 6A deduction. So there are two amendments which is proposed in chapter 6A. One is 80CCD. 80CCD is a deduction of employer contribution to the National Pension Scheme. So this employer contribution to National Pension Scheme is allowed as deduction if the employer contributes to the extent of 10% in case of all employees other than central government employees, and 14% in case of central government employees. Many state governments are also contributing 14%. but the employee do not get the benefit of the same because the percentage allowed to state government employees is only 10%. But now they have increased this limit of 14%, this 10% for state government employees to 14%. So now the provision for 80CCD says
any contribution by state government or center government for the center government or state government employees is allowed as deduction to the extent of 14% of the salary, and in all other cases it is only 10% of the salary that is allowed under 80 CCD. The next amendment is there under section 80DD. 80DD is the section which says that any person who have incurred any expenditure on the medical treatment of a person who is disabled, either a dependent person who is a relative and he have incurred a medical expenditure on that, then this is allowed as a deduction, that is allowed as deduction to the extent of the medical expenditure or 75,000, whichever is less. In case of severe disability, this is allowed for 1.5 lakhs. Now, what will happen to this person if the person who is contributing is died? So then they have also allowed that if the person have taken an insurance policy in the name of the disabled person, that okay, after my death, the money should go to the disabled person either in the form of annuity or in the form of lump sum consideration, then this contribution by this person to that insurance premium is also allowed as deduction under 80DD. But the restriction is that money should not be given to this person before the death of the person. Now they have amended this section and they said that the money, if the insurance company pays any annuity or a lump sum payment before the death of the person who is contributing, I say it as a parent or a guardian, before the death of the parent and guardian, then also it is tax free, provided the age of the guardian should be more than 60 years. तो 60 साल के बाद अगर उसको पैसा मिलता है, तो then in that case it is deemed to be exempt, तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना. Then there is a section called 80IAC. 80IAC is for startups, and the startup, it says that all the startups are eligible for 100% deduction of profit for a period of 3 years out of a block of 10 years. But the startup should commence registered up to 31st March 2023. Then 2022. Then this period have been increased by 1 year, and they said the startup should be registered up to 31st March 2023. So 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया. Similarly, there was a provision of 115 ABA, 115 BAB for in case of manufacturing companies or companies who engage in production of goods, that these companies are eligible for a reduced tax rate of 15% if they started their production up to 31st March 2022. So this period have also been increased by 1 year, and they should start their production up to 31st March 2023. So they are eligible for a reduced tax rate of 15%. So 15% से ही उनका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा under section 115 BAB. Now let's come to a very, very important amendment with respect to updated return. So when this updated return came, this Anuji have asked me, Avinash, now let us not file the normal returns, let us file only the updated returns. I said, no, sir, it is not that simple. Now, what is the provision and how this have been done? Let us understand that. So now we know that assessee can file the return of income either 139(1), 139(4), or 139(5). So either he file an original return, revised return, or a belated return. The maximum time limit to file this return is up to 31st March till last year. But for the current assessment year, what will be start from 1st April 2022, for the assessment year 22-23, the last date to file the revised return and the belated return is reduced by 3 months from the end of the assessment year, that is 31st December. तो अनु जी और हमने सोचा था कि 31st दिसंबर के बाद हम घूमने जाएंगे और 3 महीने अब कोई काम नहीं होगा, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, काम है तुम्हारे लिए. Now they have said that if any person wants to file an return which is called as updated return,
after the normal time have been escaped or normal time have lapsed, then you can do so till the end of 2 years, 24 months from the end of the assessment year. तो असेसमेंट ईयर के 2 साल बाद तक आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय आपको टैक्स जमा कराना है, आपको इंटरेस्ट जमा कराना है, और अनुजी आपको साथ में एडवांस जो है एडिशनल टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। अब एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। So updated return should be followed by the tax on the income, interest on the income, and additional tax on the updated income. All three taken together, allow in the form of a challan, and that challan should accompany the updated return. If the challan is missing, then it is treated as a defective return. Defective return means a return which is not regarded as a return till the time defect is cured. सो आपको बिना टैक्स जमा कराए, बिना एडिशनल टैक्स जमा कराए, बिना इंटरेस्ट जमा कराए आप जो है ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो आपको जो है ये काम करना पड़ेगा। देन देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द रूल दैट हु कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। कुछ लोगों को कहा गया कि आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। वो कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अ लॉस रिटर्न। सो आप लॉस की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रिटर्न्स। तो जो आपने पुरानी रिटर्न फाइल करी है उसमें जितनी टैक्स लायबिलिटी दिखाई है उससे कम आप नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अ रिटर्न फॉर रिफंड। तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी और अब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ और रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ, नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिफंड। तो ओरिजिनल रिटर्न मेरी रिफंड रिटर्न थी, बट अब मैं अपडेटेड रिटर्न करके अपना रिफंड बढ़ाना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये मैंने आपको 4 केस बताए जिसमें आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, if there is a search proceeding, survey proceeding, or a requisition have come and for jewelry, etc., then in these 3 cases also assessee cannot file updated return. आप assessee जो है वो updated return file नहीं कर सकता। Next, an updated return cannot be filed if the assessee have already filed an updated return for that particular assessment year. मीनिंग देयर बाय आपने अगर एक बार ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी किसी भी एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की, तो दोबारा आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप अपडेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, आप अपडेटेड रिटर्न दोबारा फाइल नहीं कर सकते। एक बार ही फाइल कर दिया, काम खत्म। और फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर no updated return can be filed if there is an assessment proceeding going on or reassessment proceeding going on or recomputation is going on for that particular assessment year. तो अगर आपको 143(2) का नोटिस आ गया, अगर आपको 148 का नोटिस आ गया, अगर आपको 153A का नोटिस आ गया, अगर आपको 153C का नोटिस आ चुका है, तो in all those cases the assessee is barred from filing updated return. अग्रवाल जी, आपको आपके किसी क्लाइंट को 148A का नोटिस आया है, कैन यू फाइल अपडेटेड रिटर्न और नॉट? क्या लगता है आपको सर? अनम्यूट करके बोलो। ये तो 148 के लिए रोकना है ना, 148A के लिए नहीं रोका ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 148A नोटिस, शो कॉज नोटिस इज नॉट अ रीअसेसमेंट नोटिस। तो 148A का अगर नोटिस आया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट द मोमेंट यू हैव रिसीव्ड 148 नोटिस, तब आप इसको नहीं फाइल कर पाओगे, तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इंफॉर्मेशन एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अंडर बेनामी लॉ, बेनामी एक्ट कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ब्लैक मनी एक्ट में इंफॉर्मेशन है, कोई फेमा के स्मगलिंग एक्ट में इंफॉर्मेशन है, कोई कोपा पोसा एक्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, तो भी एसएससी जो है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता।
उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन आई, पैनामा पेपर्स आया, क्या इंफॉर्मेशन आई, या एचएसबीसी की लिस्ट का आया, या कोई और इंफॉर्मेशन आई, तो भी एसएससी जो है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। लास्ट उन्होंने कहा कि अगर एसएससी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो चुकी है तो प्रोसिक्यूशन के केस में भी एसएससी जो है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। सो दैट इज नॉट अलाउड। नाउ वी हैव कम टू नो कि कब कब वो नहीं कर सकता। अब मैं करना चाहता हूं तो मैं कैसे फाइल करूंगा ये अपडेटेड रिटर्न। उन्होंने कहा सबसे पहले आपको जो है अपडेटेड रिटर्न के केस में यू हैव टू कंप्यूट दी टैक्स एंड एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए उन्होंने कहा यू गो टू सेक्शन 140 बी। 140 बी में उन्होंने बताया कि कैसे कंप्यूट होगा। उन्होंने कहा 140 बी में कहा तो देयर वुड बी टू सिनेरियोस, या तो एसएससी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी होगी या एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करी फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। सो अनु जी, अगर अगर एसएससी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी हुई टिल डेट और वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, ही इज वेलकम। So what he has to do is he has to compute his income, which we call it updated income. उसके ऊपर whatever is the tax liability वो कंप्यूट कर ले, उस टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर दे जो भी टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स उसने दिया है उस पर्टिकुलर ईयर का, रिड्यूस कर दो। कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर उसने कोई फॉरेन टैक्स का क्रेडिट लेना है, रिड्यूस कर दो। कोई भी मैट या एएमटी का कोई क्रेडिट लेना है, उसके बाद जो आया दैट इज कॉल्ड हिज टैक्स लाइबिलिटी। अब इस टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो 234 ए बी सी तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर दो। अब जो तीनों का इंटरेस्ट ऐड करके जो आया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इंटरेस्ट। तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इसका 25% देना है हमें एज एडिशनल टैक्स अगर हमने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी कब, 1 जनवरी से लेकर, मतलब 1 जनवरी ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेकर 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 12 महीने तक, मतलब 31 मार्च ऑफ द टैक्स टू असेसमेंट ईयर तक, तो हमें 25% एडिशनल देना है। और हमने 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर, मतलब सेकेंड ईयर में करी तो हमें 50% एडिशनल देना है। तो 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी। अब क्वेश्चन आया क्या लेट फाइलिंग फीस होगी? नहीं, नहीं, वो लेट फाइलिंग फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अग्रवाल जी कहते हैं कि मैंने तो रिटर्न फाइल करी हुई है, या तो मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी हुई है, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी हुई है, या मैंने ओरिजिनल रिटर्न करी थी मैंने उसको रिवाइज कर दिया, या बिलेटेड को रिवाइज करते तो रिवाइज रिटर्न करी है, कोई बात नहीं। सो इफ यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम, तो आपको कैसे कंप्यूट करना है? उन्होंने कहा आप अपडेटेड इनकम निकालो। अपडेटेड इनकम पे आप अब टैक्स निकाल लो। हाउ मच इज द टैक्स? रिड्यूस कर दो इस टैक्स को। किससे? जो टैक्स आपने पुरानी रिटर्न में दिया हुआ है, चाहे वो टीडीएस से दिया हो, टीसीएस से दिया हो, सेल्फ असेसमेंट से दिया हो, एडवांस से दिया हो, वो सब उसमें रिड्यूस कर दो। कोई रिफंड आपको इशू हुआ है तो वो रिफंड ऐड कर दो। तो अगर हो सकता है पहले मैंने कोई रिफंड ले रखा हो तो उसको ऐड कर दो। अब इसमें रिड्यूस करो, अगर जो आपने नई इनकम दिखाई, न्यू अपडेटेड इनकम दिखाई, अगर उसके रिलेशन में कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो उसमें से माइनस कर दो। अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है माइनस कर दो, कोई मैट और एएमटी का क्रेडिट है माइनस कर दो। अब जो आया दैट इज कॉल्ड एन टैक्स पेबल ऑन अपडेटेड इनकम, जो आपको देना है। इसमें ऐड करो 234 बी और 234 सी का इंटरेस्ट, ऐड करो 234 ए का इंटरेस्ट अगर ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न है तो, और कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल करी वहीं तक का, पूरे आज तक का नहीं, वहां तक का। जबकि पहले वाले केस में हमने पूरा आज तक का किया था। अब इसमें क्या करना है? 1 अप्रैल से लेकर वहां तक का ही करना जब तक आपने रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल वाले बिलेटेड रिटर्न फाइल करी। तो ये करके जो आएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया कैलकुलेट। टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के 25% अगर 12 महीने के अंदर है, और 50% अगर वो 12 महीने से ज्यादा और 24 महीने के अंदर है, तो ये आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन दिस अपडेटेड रिटर्न। तो ये आपको अपडेटेड रिटर्न में ये उन्होंने अमेंडमेंट करी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। Now let us move to the amendment in section 148 and 148A, read with 149A and other 153 etc etc. ये क्या अमेंडमेंट हुई सर? सर 148 में ये लिखा गया था कि नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड विदाउट प्रोवाइडिंग अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A,
और वहां पे लिखा हुआ था कि कोई भी प्रोसीडिंग करनी है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नोटिस इशू करना है शो कॉज तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नोटिस का शो कॉज का जो जवाब आएगा उसके बाद अगर आपको 148 का नोटिस खोलना केस खोलना है तो भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसके बाद 148 में लिखा हुआ था दो केसेस में किसी भी तरह की कोई अप्रूवल की या शो कॉज की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 148 इशू हो सकता है। और वो दो केस थे कि अगर आपका जो नोटिस है, आपका जो रीजन ऑफ स्क्रूटनी है वो कैश सिस्टम से आया, रिस्क बेस्ड सिस्टम से आया, तो आपको जो है किसी भी तरह की कोई अप्रूवल की या 148 की जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर कोई सीएजी का ऑडिट ऑब्जेक्शन है तो भी आपको किसी भी तरह की कोई 148 की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने कहा सीएजी को तो डिलीट कर दिया, मीनिंग देयर बाय एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन। और अनुज जी को पता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट में कितने होते हैं, इंटरनल कितने होते हैं, रेवेन्यू कितने होते हैं। तो किसी भी तरह का कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ तो उस केस में आपको सीधा 148 का नोटिस आएगा। अगर कोई सर्च का हुआ या सर्वे में कोई प्रोसीडिंग आए, कोई इंफॉर्मेशन आई, तो भी आपको सीधा नोटिस आ सकता है। कोई 135 ए में जो एक इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग है, डिजिटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन, वहां से कोई इंफॉर्मेशन हुई तो भी आपको जो है अप्रूवल की और 148 की जरूरत नहीं है। और लास्ट इन्होंने कहा कि कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर से कोई इमर्ज हुआ फैक्ट, तो उसमें भी अब आपको 148 की जरूरत नहीं है। ये अब उन्होंने अमेंडमेंट करी। नेक्स्ट अनुजी, 148 का नोटिस कितने सालों का इशू हो सकता है? हाँ जी अनुजी, कितने सालों का 148 इशू हो सकता है आज की डेट में? हाँ जी अग्रवाल जी। 4 साल। है 148 ए 3 साल है। 3 साल है सर, 4 साल से 3 साल है। और 3 साल के बियॉन्ड करना है मुझे तो सो देन 3 साल के बियॉन्ड करना है मुझे तो इशू, तो 3 कमिश्नर साल की से 3 प्रिंसिपल साल से 7 साल के उसमें हो सकता है विद 10 साल। अप्रूवल के साथ। लेकिन देयर हैज टू बी 50 एन साल। एस्केप, then they have to be an escape assessment exceeding rupees 50 lakh which is represented by an asset। अन्नू जी ने 7 साल पहले मकान खरीदा सफदरजंग एनक्लेव में एक और वो मकान इन्होंने 2 करोड़ रुपए का खरीदा, और आज मैं 148 इशू करना चाहता हूँ एज एन असेसिंग ऑफिसर। आई कैन डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 7 साल पहले जो ये 10 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का इन्होंने मकान खरीदा, दैट इज एस्केप असेसमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट हाउस प्रॉपर्टी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैंक बैलेंस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी अदर एसेट। बट अगर अनु जी आपने 7 साल पहले कोई पार्टी करी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सफदरजंग स्टडी सर्कल, और सबको बुलाया था और रिटर्न में सबको गोल्ड कॉइन भी दिया था, ठीक है सर, फिर नहीं आती। 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अनु जी कह रहे हैं इनको कैसे पता चला, ये तो 7 साल पहले खर्च की थे, मुझे सब पता है सर आपने क्या क्या किया था। तो अगर वो उसके ऊपर आपका 148 इशू नहीं हो सकता था, बिकॉज आपने जो भी किया था खर्चा करके खत्म कर दिया। आज की डेट में कोई भी एसेट तो नहीं है ना आपके पास। तो अब इन्होंने इसको अमेंड किया और उन्होंने कहा कि 3 साल से 7 साल के बीच में आपका 148 इशू किया जा सकता है, 148 इशू किया जा सकता है अगर आपकी इनकम एस्केप असेसमेंट 50 लाख या उससे ज्यादा है। एक्चुअल एओ को लगती है, एक्चुअल में कितनी पता नहीं, बट एओ इज ऑफ द ओपिनियन कि 50 लाख और उससे ज्यादा है इनकम एस्केपमेंट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट, जो पहले था वही है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एनी ओकेजन और इवेंट। तो आपने वो जो इवेंट किया था सफदरजंग स्टडी सर्कल का, तो वो एक ओकेजन है, उस ओकेजन पे जो गोल्ड कॉइन बांटे थे वो हमें पता चल गए, और अब हम आपके 148 ए में आपको नोटिस दे सकते हैं। और थर्ड उन्होंने कहा इफ इट इज ऑन अकाउंट ऑफ एनी एंट्री और एंट्रीज, तो मेरे पास कोई शेयर एप्लीकेशन मनी की एंट्री खड़ी है, मेरे पास कोई लोन की एंट्री खड़ी है। अभी हम सोचते थे कि 7 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। नाउ दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी 148 नोटिस फॉर 7 years आफ्टर 3 years। तो अब 10 साल के केस खुलेंगे सर, खाली 3 साल के नहीं खुलेंगे। जो हम मजे बना रहे थे कि भाई अब तो 3 साल ही हुआ करेगा 148, बाकी सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया, अब वो सारे केसेस हो गए। सिमिलरली 153A और 153C में भी सिमिलर प्रोविजन डाल दी है, और अब आप ब्लॉक असेसमेंट जो है वो 10 सालों की जा सकती है, प्रोवाइडेड 3 साल के बियॉन्ड जो है वो 50 लाख से ज्यादा का कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आए।
So that is an amendment in 148, 148A, 149 etc. तो ये आपको कर दिया गया सर। 3 वेलकम अमेंडमेंट किया गया, वेलकम अमेंडमेंट की गई जो मैं लेना चाहता हूँ विच इज इम्पोर्टेंट। पहला तो सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है नाउ इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू 263। So Commissioner of Income Tax Transfer Pricing can now do 263। तो वो 263 का पावर उसको दे दी गई। दूसरा, एक नेचुरल प्रॉब्लम रहती थी किन केसेस में अंडर सेक्शन 195। 195 में क्या होता था सर, बहुत बारी नॉन रेजिडेंट ऐसा कहते थे कि भाई मेरे को तो नेट ऑफ टैक्स चाहिए। नेट ऑफ टैक्स चाहिए मतलब कि भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, जो भी इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है that has to be borne by the person who is making the payment। So अगर मैं किसी फॉरेन और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूँ और नेट ऑफ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो मैं बियर करूँ। बहुत बार ऐसा होता था कि वही कि पेयर का ये व्यू होता था कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, देयर इज नो टैक्स व्हिच इज लायबल टू बी पेड इन इंडिया। बट उसके पास कोई रेमेडी नहीं होती थी, वो टैक्स जमा करा देता था, उसके बाद वो कहीं से भी उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकता था। देयर इज नो प्रोविजन। नाउ दे हैव अमेंडेड दिस सेक्शन 195 एंड दे सेड कि अगर कोई नेट ऑफ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है, एंड प्लीज अनुज जी ध्यान से सुनिएगा ये क्या किया है, दिल्ली में मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स में ये इशू आएगा। अगर कोई नेट ऑफ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो डिडक्टर है इंडियन पार्टी है वो अपनी जेब से टैक्स जमा करा देती है फॉर मेकिंग द पेमेंट टू दैट नॉन रेजिडेंट, उस केस के अंदर अब जो भी डिडक्टर है विद इन 30 days ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स में अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन सा? टीडीएस वाला, इंटरनेशनल टैक्स में जो बैठता है। उसके पास वो अप्लाई करेंगे और वो ये कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू मी दिस अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, हेंस यू प्लीज रिफंड दिस अमाउंट टू मी। तो अब उसको 30 days में अप्लाई करने के बाद असेसिंग ऑफिसर हैज टू पास एन ऑर्डर इन राइटिंग आइदर टू ग्रांटिंग द रिफंड और डिनाइंग द ग्रांट ऑफ रिफंड। तो या तो वो मेरे को रिफंड दे देगा या मुझे मना कर देगा। दोनों केसेस में ही हैज टू पास आर ऑर्डर, और ये ऑर्डर के अगेंस्ट अब मैं सीआईटी अपील कर सकता हूँ, उसके बाद आईटीएटी जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो नेट ऑफ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने जो है आपको अपील करने का या असेसमेंट कराने का एक जो है एडिशनल आपको राइट उन्होंने दे दिया है, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट सर एक नई टर्म उन्होंने यूज करी है विच इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड रिटर्न। सो अनु जी अब आप याद करना, ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न एंड नाउ मॉडिफाइड रिटर्न। ये मॉडिफाइड रिटर्न क्या हुआ है? अग्रवाल जी कह रहे हैं इतना याद कर करके ही मर जाएगी अब तो कितने याद रखेंगे कि मॉडिफाइड रिटर्न नहीं आई है, मॉडिफाइड रिटर्न। तो ये मॉडिफाइड रिटर्न क्या है सर? देखिए अग्रवाल जी ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने डाली। सर अगर मान लीजिए आपकी कोई 2 कंपनियां हैं ए एंड बी, ए बी में मर्ज हो गई, ए कंपनी जो है वो बी कंपनी में मर्ज हो गई। तो जो मर्जर होता था वो होता था अपॉइंटेड डेट से। मान लीजिए 1 अप्रैल 2017 अपॉइंटेड डेट है तो उस डेट से वो मर्जर होगा। ऑर्डर आया 2019 में जाके, तो 2019 में हम रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2017 से क्या करते थे, कंसोलिडेट करते थे और फिर उसे हमें डिपार्टमेंट में फाइल करना है। अब फाइल करने की टाइम लिमिट तो है ही नहीं, देयर इज नो टाइम लिमिट। अगर असेसमेंट चल रहा है तो असेसमेंट में दे देते हैं, नहीं चल रहा है तो कुछ है ही नहीं, प्रोसीजर ही नहीं है, देयर इज नो प्रोसेस। अब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मर्जर या डीमर्जर हुआ मतलब कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसमें अपॉइंटेड डेट और जो एनसीएलटी या हाई कोर्ट की जो डेट है वो उसमें डिफरेंस है, तो जिस भी दिन हाई कोर्ट का या एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है फॉर बोथ द कंपनीज टुगेदर। तो वो उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म आएगा, स्पेसिफाइड प्रोसीजर आएगा, क्योंकि जो कंपनी मर्ज होगी उसका टीडीएस होगा, उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, उसका एडवांस टैक्स होगा, सब चीजें ट्रांसफर होंगी। तो आपको एक इन्होंने मॉडिफाइड रिटर्न दे दिया इन केस ऑफ मर्जर्स एंड डीमर्जर्स, जहां पे 6 महीने के अंदर अंदर 6 months फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी और द हाई कोर्ट।
तो उसके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, ये आपको ये मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी है। इसके हाँ जी सर। I would like to comment here that to the viewers and the participant that ये जो amendment है ये अविनाश की recommendation पे हुई है. This was a recommendation given by Mr. Avinash Gupta to the authorities, and they accepted it and they have incorporated it in this budget. Yes sir, yes sir, I will take that credit that I am the person who have given this suggestion to them that this has to be there in place because everybody is facing lot of problems including me. मर्जर डीमर्जर में बड़ी दिक्कत आ रही थी. नेक्स्ट सर, एक और अमेंडमेंट की गई, वो मैं ये नहीं कहूंगा मेरी वजह से की गई, बट हाँ बहुत लोगों की ये दिक्कत थी और ये डिपार्टमेंट वालों ने अमेंडमेंट कराई है. सर व्हाट हैपन इन दी आईबीसी प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट में अगर कोई कंपनी जाती है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो कंपनी बाहर आती है तो एनसीएलटी डिसाइड करती है कि उसकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है उस डिमांड्स के ऊपर क्या होना है. क्या वो डिमांड पूरी पे होनी है या आधी पे होनी है या जीरो हो जानी है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस डिमांड यूज्ड टू बी जीरो, बट व्हेन वी गो टू द असेसिंग ऑफिसर सेज दैट आई डू नॉट हैव एनी पावर टू रिड्यूस दैट डिमांड. कोई पावर ही नहीं है जहां से मैं ये रिड्यूस कर सकूं. So now they have incorporated a new section called 156A, whereby it was specifically provided कि अगर कोई IBC की कंपनी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में आप जो है डिमांड को मॉडिफाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 156A. तो वो आपको नोटिस ऑफ डिमांड रिवाइज करके दे दिया जाएगा. दैट इज अ वेलकम स्टेप. तीसरा सर, तीसरी अमेंडमेंट जो हमारे खिलाफ है, रेवेन्यू के फेवर में है. अगेन इन द केस ऑफ मर्जर, अगर एक मर्ज एंटिटी के खिलाफ मान लीजिए ए और बी मर्ज होनी है, ए बी में मर्ज होनी है, मर्जर से पहले, ऑर्डर आने से पहले ए की प्रोसीडिंग चल रही थी और जब फाइनल ऑर्डर पास हुआ वो ए के नाम पे ही पास हो गया, बी जबकि ए नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी, ए जो थी वो मर्ज हो चुकी थी बी के साथ. तो आइडियली ऑर्डर जो है वो बी के नाम पे पास होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ ए के. तो इन दोस केसेस हम वो ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट सेड दैट दिस ऑर्डर इज इनवैलिड. तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये ऑर्डर को ही क्वेश कर दिया. नाउ दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 170 सबसेक्शन 2A, whereby they said कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो ऑर्डर मर्जिंग एंटिटी को दिया गया था दैट इज डीम्ड टू बी ऑन द सक्सेसर एंटिटी, तो वो उनको वैलिड करने के लिए ये अमेंडमेंट 172A में लाए. Then let us come to few amendments in the TDS chapter which is important, and then I would like to close down my session on this. But there is one first amendment in the TDS with respect to 194IA. अनुजी 194IA में क्या होता है, जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन और द पेयर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू विथहोल्ड 1% TDS. Am I correct? Am I correct, Yes. Anuji? Yes. For example, you have purchased a property whose consideration is 70 lakhs, but उसकी stamp duty value 80 lakhs थी. तो आप TDS कितने पे काटते थे? हम TDS 70 lakhs पे काटते थे. Now they have amended section 194IA and saying that in this case the TDS has to be deducted on the amount of consideration or stamp duty value whichever is higher. जो भी ज्यादा होगी उस पे काटना पड़ेगा TDS. और अगर कंसिडरेशन 50 लाख से कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो भी आपको TDS काटना पड़ेगा ऑन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तीसरा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ये कहीं नहीं लिखा. ये अभी इसके लिए क्लैरिटी चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे आएगी. चौथा, इसमें एक इशू ये आया कि अगर हम 50C को देखें या 43CA को देखें, वहां पे लिखा हुआ है कि if your consideration, if the stamp duty price is within 10% of your consideration, then your consideration price is deemed to be the stamp duty value. तो क्या 194A में भी ये माना जाएगा या हमें 194A में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही TDS काटना पड़ेगा. एग्जांपल सर, 70 लाख रुपए की मैंने कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 74 लाख है, तो ये विदिन 10% ऑफ द कंसिडरेशन है. तो अंडर 50C मुझे 70 लाख पे ही टैक्स देना है, बट अंडर 194IA मुझे TDS जो है वो 74 लाख पे काटना है. तो दिस रिक्वायर्ड अ रिकंसिडरेशन बाय द बोर्ड
तो ये जब होगा तो वो उसमें देखेंगे कि कैसे इसमें आता है। नेक्स्ट 194 आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर अनुजी जितने दिवाली गिफ्ट आते हैं सब बंद, ऑल काइंड ऑफ बीड्स एटसेट्रा सब बंद हो जाएगी। क्या क्या कहा है सर उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी एसएससी ने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस किसी भी पर्सन को अदर देन एम्प्लॉय, if he have paid or given any benefit or perquisite or consideration referred under section 28 IV 28(4) में अगर कोई भी बेनिफिट दिया और द वैल्यू ऑफ दैट बेनिफिट एक्सीड्स 20,000 rupees, then in those cases the person who is giving the benefit is under an obligation to withhold tax at the rate of 10%. बाबू जी जो आपके पास दिवाली गिफ्ट आया 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, अब उसके ऊपर तैयार हो जाओ, 10% टीडीएस कट के आएगा। जितनी डीलर मीट होती थी, जितना वो सिंगापुर घुमाने लेके जाते थे या बैंकॉक घुमाने लेके जाते थे, उन सब के ऊपर अब जो है 10% कंसिडरेशन पे या तो उनसे कलेक्ट करेंगे या फिर कंपनी अपनी जेब से जमा कराएगी या एसएससी अपनी जेब से जमा कराएगा। दिस इज 194 आर। और जो 20,000 रुपए तक का दोगे तो कोई बात नहीं, 30,000 रुपए से नीचे चलेगा। तो अनु जी अगर आपने मेरे को देना हो तो 20,000 से कम का देना, 20,000 से ज्यादा मैं नहीं लूंगा कोई भी गिफ्ट, ठीक है। आपने जो है रिटर्न भर दी मेरी, और आपने रिटर्न भरने का चार्ज करते हो 50,000 रुपए और मेरे से कोई चार्ज नहीं किया, तो मैं आपका 10% टीडीएस काट लूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। सो एनी बेनिफिट, एनी परक्विजिट गिवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, आपको कुछ क्या, किसी एडवोकेट ने, अग्रवाल जी के बेटे दिव्यम ने मेरा केस फ्री में लड़ लिया और मेरे से पैसे नहीं लिए, तो कोई बात ही नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बेनिफिट उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। दे हैव टू विथहोल्ड दिस टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट एक्सीड्स ₹20,000। 20,000 से ज्यादा है तो ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट last amendment that I want to take is with respect to section 206AB और 206CCA। ये क्या सेक्शन थे सर? ये सेक्शन ये कहते थे, ये सेक्शन ये कहते थे, एक मिनट सर, आई एम टेकिंग अ सेशन, आई विल कॉल यू बैक। So what these sections used to say, these sections says कि अगर डिडक्टर ने टैक्स डिडक्ट करना है और जो डिडक्टी है उसने पिछले 2 साल की अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो द रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस विल बी ट्वाइस द रेट और 5% whichever is हायर। अब उन्होंने ये 2 साल को कन्वर्ट कर दिया ओनली 1 साल में। तो जैसे ही डिडक्टर ने उससे पूछा भाई साहब पिछले साल की रिटर्न भरी नहीं भरी, तो ट्वाइस द रेट पे क्या करना है, हमें टीडीएस काटना है। तो 2 साल के पीरियड को उन्होंने रिड्यूस करके अब 1 साल का पीरियड बना दिया। तो these are few important amendments what have been proposed। एक सर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ओर रह गई, क्योंकि अनु जी जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ज्यादा काम करते हैं, तो मैंने कहा अब इनको बता दूं कि क्या किया। सर 7 अमेंडमेंट करी उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, 7 टोटल अमेंडमेंट, 22 पेजों का मेमोरेंडम दिया चैरिटेबल पे। क्विकली सुनिए सर क्या किया। सर 1023C में कहा गया था कि अप्रूवल लेनी है प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड अथॉरिटी से, उसको चेंज करके कर दिया प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम। दूसरा सर हमारा 1023C(5) था सेक्शन, जिसमें कहा था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस, अगर कोई है रिलीजियस ट्रस्ट है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल, मॉस्क एक्सेट्रा मेंटेन कर रही है, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर 1023C प्रोवाइडेड 85% इज स्पेंट। दूसरी अमेंडमेंट इन्होंने यहाँ पे करी कि अगर मंदिर बनाने पे, मस्जिद बनाने पे, ये गुरुद्वारा बनाने पे, चर्च बनाने पे, मॉस्क बनाने पे अगर आपने कोई भी पैसा लिया फॉर मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन, राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए लिए, ध्यान रखिएगा सबके कंटेक्स्ट में आई है अमेंडमेंट, तो देन इट इज डीम्ड टू बी कॉर्पस डोनेशन, deemed to be corporate donation provided the amount is used only for maintaining the building of mandir, masjid, gurdwara and the amount is invested in 11(5) more। सर मतलब क्या हुआ, अब 85% खर्च नहीं करना, जितना पैसा आया सब एग्जाम, बट आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते और 11(5) के मोड में आपको इसको प्रिस्क्राइब करना है। मंदिर को पैसा दिया, मंदिर उसका खाना नहीं बांट सकता,
they cannot do a food distribution, they cannot do any other thing, but उस मंदिर की मेंटेनेंस पे, बिल्डिंग बनाने में पैसा लगाना है, तो आपका ये कॉर्पस डोनेशन मान लिया जाएगा. दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट. थर्ड अमेंडमेंट, सर अगर आपने 85% खर्च नहीं किया तो देन देयर इज एन ऑप्शन टू मेक एन एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 11(2). 11(2) में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और वो एक्यूमुलेशन जो है वो 5 साल के लिए करते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस. अब उन्होंने ये कहा, और अगर ये नहीं करते, अगर हम 11(2) का एक्यूमुलेशन में खर्चा नहीं करते, देन इट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द 6th ईयर. ये छठे साल की जो है इनकम मान ली जाती है. अब उन्होंने ये कहा कि छठे साल की नहीं, 5वें साल की ही इनकम मानी जाएगी. इट इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द 5th ईयर इटसेल्फ. दैट इज थर्ड अमेंडमेंट व्हाट हैव बीन प्रपोज्ड इन दिस. फोर्थ, सर हमें कहा गया है कि हमें जो है ऑडिट अकाउंट का ऑडिट करना है, इसकी, इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, जो भी होगा उसका ऑडिट करना है. बट कौन से अकाउंट्स, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Now they have defined the list of books of accounts to be maintained by the charitable institution for doing this audit. दो मिनट बैठ जा, चल रहे हैं. Then next, fifth amendment, हमारे यहाँ 139(4)(c) में 11-12 की रिटर्न भरी जाती थी, बट उसमें 1023 इंक्लूड नहीं था, उसको इंक्लूड कर लिया गया. सिक्स्थ अमेंडमेंट, सर अगर कोई 13(3) के पर्सन थे, मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, या पर्सन हु इज मेकिंग अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट, तो उसको कहा गया कि अगर आपने इसको कोई भी बेनिफिट पहुंचाया तो आपकी ट्रस्ट की एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी. लेकिन अगर वो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इलाज कराया तो कोई बात नहीं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाई करी तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी क्या कर ली जाएगी, एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी. अब उसको अमेंड किया, उन्होंने कहा नहीं, पूरी एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं करेंगे, जितने का बेनिफिट पहुंचाया उतना हम डिसअलाउ कर देंगे पहला, और उतने ही अमाउंट की हम पेनल्टी लगाएंगे 271(a)(e) में, अगर पहली बार बेनिफिट दिया. दूसरी बार दोगे या उसके बाद दोगे तो 200% ऑफ द अमाउंट स्पेंड, 200% ऑफ द टैक्स नहीं, 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट विच इज गिवन टू अ 13(3) पर्सन, उसको हम जो है ये पेनल्टी आपको लगाएंगे अंडर सेक्शन 271(a)(e). तो सर दीज आर all amendments which have been proposed in Finance Bill 2022. This is all from my side. Thank you very much. If you have any question, we can discuss it. Otherwise, I would like to close down this session because I have to go to annual function. Yes, sir, Anuji. नहीं आगे जाके ना. Yes, sir, Anuji. Anything else? Agarwal ji. I think because you are short of time also, तो अगर किसी के कोई questions हो तो वो बेशक हमारे को स्टडी सर्कल उस पे मेल कर देंगे, so that we will be able to answer those questions to you in case there is any clarification which is required. Thank you, Avinash ji, for having presented this gist of the changes and the other aspects of the Finance Bill 2022. We are from the study circle. Thank you a lot for having spared this time for presenting this budget. Thank you so much, Avinash ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.